Welcome back, guys. I'm Karinga Dynamics. Question 5. This is a very basic question. This is a very simple question. Very common sense dependent question. So let's start. Question 5. Figure 1.1 shows the thinking distance and the braking distance for a car being driven along a dry road and a wet road. Dry and a wet road at the same speed. So the only difference there is in these two scenarios is the road being dry or wet. Calculate the total stopping distance for the car on the wet road. The total stopping distance will be the thinking process and the braking process. ठीक है ना? So the दोनों thinking and braking will include the stopping because stopping has two components, which is initially आप जब think करते हो आप सोचते हो कि you realize that you have to brake and then you start to brake. ठीक है ना? That is the process in which stopping distance is मतलब उस comprised. तो 18 plus 60 will be 78 78 meters. अच्छा, complete the sentence. The thinking distance is the distance traveled between seeing the hazard and applying the brakes. That is what the thinking distance is. Thinking distance is the distance between जब आप अपनी सोच को सोचते हो और उस सोच को इम्प्लीमेंट करते हो. That is what the thinking distance is. तो ये देख लेते हैं and start to apply brakes like what I said. ये इधर आ जाएगा. ठीक है ना? आगे देख लेते हैं. C1 suggests why the thinking distance is the same on both roads. अच्छा, like if you use a bit of common sense, you would realize that the road being wet doesn't change how you think. Like if you were tired or something, then सोचा भी जाता है कि like you would be आपकी cognitive abilities would be lower. But रोड का वेट होने से थिंकिंग आपकी स्लो होना या इफेक्ट होना विल नॉट मेक सेंस, राइट? सो दैट इज इट. थिंकिंग डिस्टेंस विल नॉट चेंज. ठीक है ना? थिंकिंग डिस्टेंस विल स्टे द सेम बिकॉज इट विल नॉट टेक यू एनी लॉन्गर टू थिंक अगर आप एक ड्राई रोड पे होते हैं या एक वेट रोड पे होते हैं. तो दैट इज द आंसर. Time taken to think react is the same, uh, and the speed is same. Yeah, I just told you the only thing which is changing is the road being wet or dry. Explain why the distance is larger when the road is wet. अच्छा, अगर आप कोई चीज देखें, अगर आप एक लुब्रिकेंट देखें, अगर आप लुब्रिकेंट अपने हाथ पे अप्लाई करते हैं, then your hand becomes softer and smoother. It becomes easier for you to glide your hands across your other hands or something, right? Like same with the road, the water acts as a lubricant. Water acts as a lubricant between the car and the road. It makes slippage और friction कम हो जाती है यार जब there would be like road will be more smooth, then the friction will reduce. And when the friction is reduced, then the only thing which is dependent on the braking power is friction. ठीक है ना? फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है ब्रेकिंग पावर. द मोर फ्रिक्शन देयर विल बी द मोर फास्टर यू विल ब्रेक. अगर आप रोलर स्केटर्स जो होते हैं उनको देखते हो तो अगर वो सीधा जा रहे होंगे तो दे अपने जो रोलर स्केट्स होते हैं दे उनको घसीटते हैं रोड के साथ इन ऑर्डर फॉर देम टू स्टॉप. या अगर आपने कोई स्केटबोर्डर देखा होगा, फॉर देम टू स्टॉप उनको कोई एक्सटर्नल फ्रिक्शन चाहिए होती है, वो अपना पाँव रगड़ते हैं साथ. तो दैट इज फ्रिक्शन. लेकिन अगर वो ऐसी जगह पे हो जहां स्लिपेज ज्यादा इजियर है तो दे वुड दे वुड हैव अ बिगर ब्रेकिंग डिस्टेंस टू. तो या friction is lowered. Backwards resistance force, less backwards force, less resistance force.
कार स्लाइड्स और स्किड्स टायर्स डू नॉट ग्रिप द रोड। जब आप मतलब बरसात के मौसम में बाहर जाते हो और लाइक बारिश हुई होती है, तब आपको ऑफन टाइम्स अम्मी या अबू ने कहा ही होगा गाड़ी आहिस्ता चलाना बिकॉज द कार इजीली स्किड्स, राइट? सो या दैट इज अ डिस्क्लेमर, प्लीज ड्राइव सेफली। तो या that is it for this video. I hope you enjoyed. This is a very interesting concept and a very basic one. So thank you for watching. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.